ओके गाइस, मेरे पास ये नी जॉइंट बहुत टाइम से पड़ा था लैपटॉप में, तो आई थॉट टू शेयर द सेम। इसको कोई भी प्लीज 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 इसको कोई भी एग्जाम में रट्टा मत मारना, स्पेशली द फर्स्ट ईयर्स। मैं इसके लिए अलग से क्या बोलते हैं नोट्स बनाऊंगी, एंड आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन द इंस्टाग्राम पेज एज यूजुअल। सो वहां से कॉपी कर लेना, नॉट फ्रॉम हियर। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ रिलेटेड टू द एनाटॉमी ऑफ द नी जॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो नी जॉइंट एनाटॉमी में इज, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें कंटेंट्स are bones involved in the knee joint, articulating surfaces, menisci, bursa, ligaments, movements of the knee joint, and muscles involved in the movements. Okay, so we'll start with the bones. नी जॉइंट बेसिकली बनता कैसे है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? दैट इज द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टीबिया एंड द पटेला। अभी इन्वॉल्व कैसे है? दिस इज द फीमर। ओके, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द इन द ह्यूमन बॉडी। फीमर का डिस्टल एंड, टीबिया का प्रॉक्सिमल एंड, और पटेला का पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, सो फीमर का डिस्टल एंड, टीबिया का प्रॉक्सिमल एंड, और पटेला का posterior aspect together forms the knee joint. Now this is only the bony structures. Uska articulating surface, how the femur articulates with the tibia and the patella to form the knee joint is the portion covered in the green area. जो एरिया ग्रीन में कवर्ड है, इट इज द tibiofemoral surfaces, and the one covered in red is the patella femoral surfaces. So basically articulating surfaces knee joint में दो होते हैं, एक tibiofemoral और एक patella femoral. ओके, tibiofemoral कैसे जॉइंट होता है? फीमर का medial epicondyle and the lateral epicondyle. Sorry, this is the medial epicondyle, this is the lateral epicondyle. Femur का medial and lateral epicondyle articulates with the tibial condyles. Okay, these two area covered in green are the condyles of the tibia. So the medial condyle and the lateral condyle of the femur articulates with the tibial condyles. और patella femoral attach होता है anterior aspect of the patella. It articulates with the distal end of the femur. Not the anterior, sorry. The posterior aspect of the patella articulates with the anterior aspect of the femur. Here we have a clear view. This is the posterior aspect of the patella, and this is the anterior aspect of the femur. They both are articulating with each other. जब knee joint flex होएगा तो एक दूसरे को articulate होंगे. Together they will form a patellofemoral joint. और यहाँ पे tibofemoral है. So this is the condyles of the femur, and this is the condyles of the tibia. They both articulate with each other and together forms a tibiofemoral articulating surface. Okay, ये जो बीच में है, the one covered in blue, sky blue kind of thing, is the menisci, which I'll explain here. Okay, अभी नी जॉइंट में दो मेनिस्काई है, एक लैटरल है एक मीडियल है. द वन कवर्ड इन द रेड इज द लैटरल, जो पर्पल में कवर्ड है दैट इज मीडियल. मीडियल बोथ आर सी शेप्ड. ओके, मीडियल मेनिस्काई इज अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टीबिया. अगर आप एक कोई बोन लेंगे टीबिया का, तो उसको इंटरकॉन्डाइलर एरिया रहता है जिसको मीडियल मेनिस्का अटैच रहता है. और मीडियल मेनिस्का इज ऑल्सो फिक्स टू टीसीएल. टीसीएल इज टीबियल लैटरल, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट. इसके मैं नोट्स डालूंगी प्रॉपर इंस्टाग्राम पे, फिलहाल के लिए इधर सुन लो. मीडियल मेनिस्काई इज फिक्स टू द, दिस इज द मीडियल मेनिस्काई which is fixed to the tibial collateral ligament. So any damage to the tibial collateral ligament usually results to the medial menisci tear. Okay, अगर कोई भी tibial collateral ligament को डैमेज होगा तो directly and indirectly there will be a medial menisci tear because they are attached to each other. This is the lateral menisci. Lateral menisci is smaller when compared to the medial menisci. As you can see, the diameter is larger than the lateral one, and it does not have any extra attachments, and it's also fairly mobile. Okay, so next comes the bursa. Just a minute. Okay, functions of menisci. Sorry.
there are three main functions of menisci. First thing, it will act as a shock absorber. Wait a second, guys. Second one, it deepens the articular surface of the tibia. Third, it prevents friction between the femoral and tibial condyles. ओके अभी जैसे हम इधर देखेंगे यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस को एक दूसरे से फ्रिक्शन ना हो इसके लिए मेनिस्काई अपना काम करेगा. So that is also one of the function of the menisci. Next comes the bursa. There are four bursa in the knee joint. First one will take the suprapatellar bursa और चारों bursa highlighted है. The suprapatellar bursa, the one highlighted in blue, this is an extension of the synovial cavity of the knee located between the quadriceps femoris and the femur. Next is the prepatellar bursa, highlighted in green. It is found between the apex of the patella and the skin. Third is the yellow one, the infrapatellar bursa. Infrapatellar bursa दो में डिवाइड होता है, एक सुपरफिशियल में और एक डीप में. सुपरफिशियल just a second. Superficial lies between the patella and the skin. ये superficial है जो patella और skin के बीच में lie होता है. And the deep one lies between the tibia and the patella. Okay, it lies between the tibia and the patella. Semimembranous, the fourth bursa, lies posteriorly. It is located posteriorly in the knee joint between the semimembranous muscle and the medial head of gastrocnemius. अभी यहाँ पे muscles को highlighted नहीं है, but yeah, मैं notes डालूंगा and I'll explain it once again. But it is located posteriorly in the knee joint between the semimembranous muscle and the medial head of gastrocnemius. Next, we'll come to the ligaments, very, very, very important part of the knee joint. First one is there are two kind of ligaments. Okay, collateral ligament, medial collateral ligament, the lateral collateral ligament. Medial collateral को tibial collateral ligament को tibial collateral ligament भी बोलते हैं. Wide और flat रहता है. Wide और flat रहता है. Okay, situated on the medial side of the femur. Proximally medial epicondyle of femur को attach है. Distally medial epicondyle of tibia को attach है. Second one, lateral collateral ligament, जिसको fibular collateral ligament भी बोलते हैं. थिनर और थोड़ा राउंड रहता है. Proximally lateral epicondyle of femur को attach रहता है. Distally fibular head को attach रहता है. Okay, so the fibula bone is also coming into the picture. Next are the cruciate ligaments, anterior cruciate ligament and the posterior cruciate ligament. I'll highlight this term cruciate. यहाँ पे cruciate is a Latin word actually. Latin में जो भी चीज क्रॉस होती है उसको cruciate बोलते हैं. So as you can see here, ये दोनों ligament एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. इसको इसलिए भी टर्म किया जाता है as an anterior cruciate ligament. Okay. So anterior cruciate ligament पहले लेते हैं the one highlighted in blue. It is anteriorly attached to the intercondylar region of tibia. It is anteriorly attached to the intercondylar region of tibia. Posteriorly is attached to the intercondylar fossa. Posteriorly attached to the intercondylar fossa. Anterior dislocation of the knee joint is prevented by the anterior cruciate ligament. Okay, it prevents the anterior dislocation of the knee joint. Second comes the posterior cruciate ligament. The highlighted in yellow, थोड़ा पीछे है. Anteriorly, anteromedial femoral condyle को attach रहता है. Proximally attached to the intercondylar region of tibia. अब ये थोड़ा posterior है तो it's not that much clear in the picture, but it is posteriorly attached to the intercondylar region of tibia. And इसका main function रहता है to prevent posterior dislocation of the knee joint. Okay. Movements of the knee joint, extension, flexion, lateral rotation, medial rotation. इसमें मैंने ranges नहीं डाला है, but I'll make sure that I put the ranges in the notes. Notes आपको Instagram के page पे मिल जाएंगे. The link will be in the description. Now coming to the muscles, when the knee produces extension, quadriceps femoris is used.
Okay, quadriceps femoris helps in making the knee in extension position. Flexion is produced by hamstring, gracilis, sartorius, and popliteus muscle. Lateral rotation is produced by the biceps femoris, and medial rotation is produced by the semimembranosus, semitendinosus, gracilis, and sartorius, and popliteus. Okay, once again. Extension is produced by quadriceps femoris. Flexion is produced by hamstrings, gracilis, and sartorius and popliteus muscle. Lateral rotation of the knee joint is produced by biceps femoris, and medial rotation is produced by semimembranosus, semitendinosus, gracilis, sartorius, and popliteus. Okay, so this was knee joint in short. इसका notes मैं Instagram पे डालूंगी. Written notes will be on the Instagram. The link is in the description box. कोई भी doubt रहेगा, you can text me on Instagram. You can comment here. Or most of the people have my WhatsApp number, so you can WhatsApp me. Thank you guys, and please once again do not rectify this in your exam. Was just a knee anatomy in short. इसको exam में rectify मत करना. Thank you.